Hello friends, welcome to English का ज्ञान चिंतन के साथ and from this particular video onwards we are going to start a new playlist in which we are going to discuss points for IELTS Task 2 for the various topics. Okay, so इस playlist में हम अलग-अलग टॉपिक्स ऑफ द ऐसे के लिए हम इनफ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको वो जो पॉइंट्स हैं उस बेस्ड ऑन दोज पॉइंट्स यू कैन राइट ऐसे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे वो पॉइंट्स में से फाइनल ऐसे कन्वर्ट होता है और एट द एंड ऑफ ऐसे बेस्ड ऑन दोज पॉइंट्स जो मैंने लिखा हुआ जो पूरा ऐसे है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस सो आप हर एक वीडियो को एंड तक देखना एंड इफ यू रियली फील दैट this kind of exercise is really helpful for you then please like share और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को और just try to provide support as much as you can. Okay, so let's start the discussion of the given topic. But before discussing this particular topic, okay, मैं आपको few general things बताना चाहता हूँ कि according to me, normally we should prefer 4 paragraph patterns for writing task number 2, in which the first one would be introduction होना चाहिए, then body paragraph 1, then body paragraph 2, and at the end there will be either conclusion or summary होनी चाहिए. ठीक है, फिर एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को वो है कि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है बिफोर गिविंग योर एसे फॉर वेरिफिकेशन टू एनी ऑफ द फैकल्टी. यानी फैकल्टी को देने से पहले आपको ईच वर्ड यू हैव टू काउंट फॉर योर एसे एंड काउंट ऑफ वर्ड्स जो है वो you can go up to 280 words but not more than that. Okay, and you should not write less than 250 also. Okay, otherwise it will affect your bands. Okay, और दूसरी एक बात कि हमेशा सेल्फ करेक्शन करो, राइट. ऑलवेज फैकल्टी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. ओके, बिफोर गिविंग इट टू someone for verification just go through your essay once or twice. Okay. And all these small things will definitely improve your score for sure. Okay, so let's go to the topic of the today's essay, and the topic is: some people say that education system is the critical factor in development of any country. To what extent do you agree or disagree? See, this particular essay is of agree disagree kind of essay, and normally और what I can say is यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है. आइदर आप स्टेटमेंट के साथ पूरे का पूरा अग्री हो जाओ, या आइदर आप डिसअग्री हो जाओ, और यू कैन बी डिप्लोमेटिक. एंड आई ऑलवेज प्रीफर गाइज टू बी डिप्लोमेटिक, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे लिखने के लिए कि आप अग्री में भी लिख सकते हो, डिसअग्री में भी लिख सकते हो, एंड इट विल बिकम क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू क्रिएट मोर पॉइंट्स ऑन बोथ द थिंग्स. और इस हिसाब से आपको ऐसे लिखने में इजी ऐसे लिखना इजी बनेगा. इफ यू गो विद द वन पॉइंट ओनली, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओनली अग्री, देन ओनली यू नीड टू क्रिएट अग्री के ही पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे. एंड इट मे पॉसिबल कि एक चीज के पॉइंट बनाने में एट द एंड यू विल हैव लेस पॉइंट्स, एंड देन वो रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट विल बी हैपन, जो नहीं होना चाहिए. सो आई ऑलवेज प्रीफर टू बी डिप्लोमेटिक इन दिस काइंड ऑफ अग्री एंड डिसअग्री काइंड ऑफ ऐसे. ओके, सो हमारे पास स्टेटमेंट है. ओके, so first of all we are going to discuss about how we should write and what things are required to be written in the first paragraph, which is introduction. अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के लिए हमको 2 एक्टिविटी करनी पड़ेगी. जो पहली एक्टिविटी है वो हमको फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट हमको कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा. ओके, और कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपको जो वो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको शांति से once or twice you need to read.
So for this particular statement, let's start the activity number 1. So for this particular statement, according to me, the keyword is development of country, right? It means कि हम जो इंट्रोडक्शन में पहले जो जनरल स्टेटमेंट होंगे वो हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के बारे में, राइट? कौन कौन से जो आप इस टॉपिक के लिए कौन से स्टेटमेंट लिखोगे वो आपको मैं एंड में जो मेरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन द फर्स्ट थिंग फॉर इंट्रोडक्शन वुड बी टू फाइंड आउट द जनरल keyword from the given statement, and once you find out that general keyword, then probably you need to write 2 or 3 statement for the keyword, and then the second activity for the introduction would be writing thesis statement, राइट? अब कोई भी ऐसे टॉपिक के लिए और ऐसे टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए ये जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो मस्ट होता है। सो विदाउट थीसिस स्टेटमेंट यू विल लूज योर बैंड। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन टॉपिक लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। तो अब थीसिस स्टेटमेंट के लिए आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा और बहुत सारी ऑनलाइन कंटेंट या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत ही हाई फाई डेफिनेशन वो देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थीसिस स्टेटमेंट के डेफिनेशन ये है कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में वो होता है जिस स्टेटमेंट से आपके एग्जामिनर को पता चले कि आप इस ऐसे में कौन सी चीजें लिखने वाले हैं। दैट इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, राइट? और इस टॉपिक के अंदर जैसे मैंने पहले बोला कि इस टॉपिक में हम वी आर गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक, इट मींस हम दोनों चीज के बारे में लिखने वाले हैं। इट मींस अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन भी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का एक क्रिटिकल फैक्टर है, लेकिन खाली एजुकेशन नहीं है मेरे हिसाब से। देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स व्हिच आर important for development of country. So my thesis statement will focus on both those points, and further my essay will discuss both points. ओके, पहले बॉडी पैराग्राफ में मैं लिखूंगा कि एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए रिलेटेड है, और दूसरे पैराग्राफ में मैं लिखूंगा कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए यूजफुल है। सो इन दैट वे माय essay will be written in further steps. Okay, but before diving into those body paragraph 1 and body paragraph 2, let's go through the thesis statement which I have prepared for this particular essay topic. Okay, in which I have tried to focus on both the things. Okay, and my thesis statement is something like this: while many people support education system for inclusive growth of country, in my opinion, there are numerous other factors which are conducive for comprehensive progress. It means बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए सपोर्ट करते हैं, दैट इज फाइन, बट इन माय व्यू देयर आर आल्सो सम अदर फैक्टर्स, ओके, जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में रोल प्ले करते हैं। ओके, सो दैट इज माय स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट पढ़ने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस ऐसे में एजुकेशन का डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के साथ रिलेशन और अदर फैक्टर्स का डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के साथ रिलेशन डिस्कस होने वाला है। Okay, so this is how you can prepare the introduction for this particular topic of the essay. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि during this discussion of essay, okay, maybe you see some unusual or unusual vocabulary words, and if you really feel that you are not aware about the meaning and meaning of those words, then you can go to my YouTube channel, और वहाँ पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें मैंने 100 words with meaning and with sentences डिस्कस किए हैं। So you can also use those videos also for getting some good vocabulary for to be utilized in your writing task. And okay,
Let's start the discussion of body paragraph 1, in which we are going to discuss how education can help a nation to grow well. Okay, so if I talk about the first point, right? So education के help से the children will become, or the adults who are being educated, they will become more sensible and law abiding citizens. यानी वो sensible citizen बनेंगे, और in addition to that they will become a law abiding, यानी जो law को follow करता है वैसे citizen बनेंगे, और indirectly उन जैसे citizens की help से जो नेशन होगा, जो भी कोई भी कंट्री है, वो अच्छे से ग्रो करेगा. So just because of that reason, we can consider this point for this particular body paragraph 1. Now let's discuss the another point in which also education can indirectly help a nation to grow. और जो दूसरा पॉइंट है वो है ये है कि एजुकेशन जो है can teach etiquettes to the students. Okay, and those kind of etiquettes will become helpful for a nation to grow well. Here I have one example. Let's say for example, this is very simple example in which with the help of education students can learn lessons of keeping nation clean, and those kind of etiquettes will indirectly produce some benefits to the nation's growth. So just because of that reason, we can also consider that point in this first paragraph of body. Then third point, students can learn skills from schools and colleges, and those skills can be utilized for nation's growth. How? Let's say for example, any students who learn skills of any research, okay, let's say of any physical kind of activities or anything, any kind of skills like learning skills of singing, learning skills of dancing, learning skills of making something or curing something. So all those skills will be used in a longer run for any country to grow properly. So in that way, we can also consider that point also in body paragraph number 1. And the last point is, like, with the help of education, proper education, the number of people who are having educated education will be more in the nation. And just because of that reason, social snakes, the social problems will gradually removed. यानी जो भी social problems है, जैसे कि right now there is a problem of girl child education, there is a problem of dowry, यानी दहेज देना, there is a problem of some crimes, okay, and all those kind of problems, with the more number of educated people in the society, वो जो हर problems है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे, and eventually जो नेशन है उसका ग्रोथ प्रॉपरली होगा. So just because of that reason, that fourth point can be also a part of the body paragraph number 1. So इस तरह से ये चार पॉइंट जो है वो चार पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं for supporting the view of education, how education can contribute for the nation's growth. I hope you understand. Now let's start discussing paragraph number 2, in which we are going to discuss other factors which can contribute for the nation's growth. Now let's discuss paragraph number 2 of body, in which we are going to focus on the factors apart from educations which can help a nation to grow properly. Okay, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, so here I have used word impeccable, which means against the meaning of that particular word is perfect. And like, if you guys are not familiar with this kind of vocabulary, then you can also refer my another playlist on my YouTube channel, where you will see all this kind of advanced vocabulary, and you can also practice them. So the first point is perfect infrastructure becomes boon. यानी जो भी एजुकेशन के अलावा कंट्री के ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडवांटेज प्रोड्यूस करेगा. हाउ?
अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, देन प्रॉपरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा विद इन वंस पर्टिकुलर कंट्री वो बढ़ेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देन इट विल क्रिएट जनरेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो वो नेशन का जो ग्रोथ होगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। So in that particular context, we can include this particular point for this paragraph. Now the second point is arsenal procurement. Procurement यानी purchase. So apart from education, कोई country को अगर grow करना है properly, तो उसको उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको उसका परचेज करके भी वो कंट्री जो है वो प्रॉपर वे में ग्रोथ कर सकती है। तो अगर कोई कंट्री को ग्रोथ करना है तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन दे शुड आल्सो इन्वेस्ट देयर मनी फॉर द आर्सेनल प्रोक्योरमेंट, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट की जो परचेज है उसमें भी जो इन्वेस्ट करके, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो परचेज है वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर बनेगा फॉर द कंट्रीज ग्रोथ। सो इन दैट वे आल्सो वी कैन इंक्लूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अवर essay. Now the third thing is that research on natural resources extraction, यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, या अगर कोई बायोगैस है, और वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है उसमें रिसर्च, जो उसका जो रिसर्च है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी नेशंस ग्रोथ। हाउ? अगर कोई कंट्री इस प्रकार के रिसर्च में अपना मनी एंड टाइम स्पेंड करेगा, सो उस ग्रेजुअली उनकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री के ऊपर फॉर गेटिंग दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिड्यूस, विल बी डिमिनिश, एंड इवेंचुअली जो कंट्री this kind of research will become helpful for nations growth. So owing to that reason, or due to that reason, we can also consider this particular point in our this paragraph 2. And the last point which I have considered for nations growth apart from education is spending on healthcare amenities, यानी कि apart from education जो हेल्थ केयर में जो भी खर्च होता है वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर बनता है कोई भी नेशन के ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर कोई नेशन के अंदर, कोई भी कंट्री के अंदर अगर हेल्थ केयर के ऊपर प्रॉपरली स्पेंडिंग होती है तो उससे जो लोग होंगे उस कंट्री के वो हेल्दी होंगे। इट मीन्स लाइक इन लॉन्गर रन a healthy workforce will be created, and healthy workforce will produce more quality work, and eventually a country will become more prosperous, और कंट्री के ग्रोथ के लिए वो in a longer period it will become helpful. So उसके वजह से this particular fourth point is also can be also considered as a part of paragraph number 2 for body. So I hope you understand both this paragraph number 1 जिसमें हमने एजुकेशन कैसे क्रिटिकल फैक्टर बनती है कंट्री के ग्रोथ के लिए वो समझा। पैराग्राफ नंबर 2 इन विच वी हैव डिस्कस सम अदर फैक्टर्स which can become part of nation's growth process. Okay, now let's discuss the conclusion. ओके फ्रेंड्स, तो अब ये कंक्लूजन के पार्ट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी कंक्लूजन लिखने वाले हो वो कंक्लूजन हमारे थीसिस स्टेटमेंट के सपोर्टिव होना चाहिए, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। यानी हमने थीसिस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी एक फैक्टर है और अदर फैक्टर्स भी एक फैक्टर है जो हमने दोनों पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं। तो हम ये कंक्लूजन में ये लिखेंगे, तो कोई भी कंक्लूजन लिखने से पहले हमको दो क्वेश्चंस हमको पूछने हैं, हु एंड व्हाट, मींस हु कैन डू समथिंग एंड व्हाट कैन बी डन। ओके, और उसके बेसिस से हम किसी भी ऐसे का कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हु यानी गवर्नमेंट हो जाएगा, और व्हाट कैन बी डन तो गवर्नमेंट को इन दोनों फैक्टर्स पे फोकस करके कंट्री के ग्रोथ के लिए
एफर्ट्स डालने चाहिए. दैट इज व्हाट द सिंपल कंक्लूजन इज अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन जो भी चीज हमने डिस्कस की है कि गवर्नमेंट कुछ कर सकता है, ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके कोई भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, तो उसको हम थोड़े सही तरीके से लिखे तो ये कंक्लूजन कुछ ऐसा बन जाएगा कि टू कंक्लूड, though education system is paramount of importance for the growth of a nation, government should also apply meticulous thinking in developing country by other option. यानी मैं ये कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को भी यूज करना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन जो अदर फैक्टर्स हमने डिस्कस किया है उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो अपना एफर्ट डाल के नेशन को अच्छी तरह से आगे ले जा सकता है. तो दैट इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर essay. I hope you understand all the points which we have discussed and you like this content too. Now it's time to show the entire essay by using these particular points which is written by me. So let's enjoy the same.